Namaste everyone. So what I'm going to tell you today will shock you, so stay till the end. On September 16th, Supreme Court ने एक petition dismiss कर दिया. Petition था to restore a 7 feet idol of Lord Vishnu at a Jawari temple in Khajuraho, Madhya Pradesh. The idol is part of a UNESCO protected Khajuraho monuments. Centuries ago during the Mughal invasions, it was beheaded और तब से आज तक dishonored खड़ा है. Petitioner Rakesh Dalal argued that this was not about archaeology. This was about faith and dignity, the right of Hindus to worship their deity in wholeness. Represented by senior advocate Sanjay N. Nulli, he requested the court to direct ASI to restore the idol and revive the sanctity of the temple. Mr. Dalal even maintained कि स्टेट गवर्नमेंट का रिफ्यूज़ल इज़ नथिंग बट अ वायलेशन ऑफ डिवोटीज़ फंडामेंटल राइट टू वर्शिप. प्रोटेस्ट हुए, कैंपेन्स हुए, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं. और फिर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्स टू दिस वॉज नॉट रीजनिंग, नो जस्टिस बट ओनली सरकाजम. ही सेज दिस इज पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, गो आस्क योर डीटी itself to do something. You say that you are a staunch devotee of Lord Vishnu, so go and pray. A Hindu-phobic trope जो पहले इन्वेडर्स यूज़ करते थे, अब सो कॉल्ड सेक्युलर एलिट्स यूज़ करते हैं, और अब इसे इंडोर्स कर दिया गया है खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा. नाउ इमेजिन अगर यही बात किसी और कम्युनिटी को बोली जाती. सपोज ड्यूरिंग द वक्फ केस CJI हैड सेड, इफ यू डोंट लाइक दिस लॉ, गो आस्क योर गॉड टू हेल्प यू. Pray, maybe he'll restore your lands. The outrage would have been explosive. Media screaming, NGOs writing to the UN, demands for resignation, so-called Bollywood crying about it on the internet, and the Chief Justice branded a bigot overnight. And this is our Supreme Court, and this is our Chief Justice, who himself is a Hindu and has a liberty to pass the Hindu-phobic judgment while living in our Hindu Rashtra. He is the CGI जो एक सिटीजन से रिस्पेक्टफुली बात करना भी नहीं जानते. People like him brought the system from inside, और इसी वजह से लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है to protest. His tenure may end in November 25, but after this remark, honestly, he shouldn't be sitting on that chair even for a single day.